संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं रितु सेठ आंटी को। रितु आंटी प्लीज आए और सत्संग की शुरुआत करें। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को तहे दिल नमस्ते। आज दिवाली के शुभ अवसर पर मेहर है मेरे रब दी, जो उन्होंने हुक्म दिया उनके गुणगान करने का। शुक्राना है मेरे गुरु के गौरव जी का, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं। बड़े मंदिर के मैनेजमेंट का, जो आज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के दिन मुझे हम सबकी जिंदगी की रोशनी, हमारे लाइट ऑफ लाइफ हमारे गुरुजी की महिमा करने का उन्होंने हमें मौका दिया। गुरुजी रब है, गुरुजी ईश्वर है, गुरुजी ही प्रॉफिट मोहम्मद है, गुरुजी ही जीसस क्राइस्ट है। He is the light that guides us। हर पल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ है, ਸਾਡੇ गुरु जी ਦਾ ही शुक्राना है। गुरु जी के बड़े मंदिर जो भाटी माइंस में है, उधर 11 ज्योतियों की शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु जी कहते सी जो कोई सामने तो भी निकल जाएगा ते ओदा भी कल्याण हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है ਇਹਦੇ ਚ। ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ Empire State ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, there were hardly any people who used to come there, but today ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बड़े मंदिर के प्रसाद में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सब कुछ जो कुछ है गुरु जी के प्रसाद में है, गुरु जी के लंगर में है। उन्हां दे चा प्रसाद विच है, जल प्रसाद विच है। मैं ते हर पल, मेरी ते लाइफ एक एक पल, एक एक सेकंड सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी का सत्संग है। कहते सी जद तक गुरु जी चोले च तद तक एवरीथिंग प्रैक्टिकल। हुण जिन्नी जिद्दी श्रद्धा उन्ना ले जाए। इट वॉज हिज ब्लेसिंग कि उन्होंने सानू बुलाया अपने कोल ते अपना रूप विखाया in the form of a human being। He is Lord Shiva, he is Mahadev। इन्नी संगत आई जिन्हां ने उन्हां नू वेख्या भी नहीं ते उन्हां नू भी गुरु जी ने दर्शन दिते ने in the form of gods, lords। and कहंदे ने जद रब दर्शन देंदा है ते ओ कोई ड्रीम नहीं है, it is actually in reality only and only his दर्शन। ओ आंदे ने ते सानू वेखदे ने। गुरु जी रसक वैरागी गुरु सी। उन्होंने he made things very simple for us। कभी उन्होंने कोई रिचुअल्स नहीं फॉलो किते, ना कोई सानू बोला, बस मन पवित्र, मन हैव प्योरिटी ऑफ थॉट। कभी ये नहीं बोला कि अमृत। एक बार किसी ने पूछा गुरु जी अमृत वेला की होंदा है, कहंदे अमृत वेला ओ होंदा है जब तुसी रब नू याद करदे हो। इट डजंट मैटर वेदर यू डू दैट दोपहर वेले करो, शाम वेले करो, सवेरे करो, कुछ नहीं, मन साफ करके उनको याद करो एंड दैट्स इट। सिर्फ एंड गुरु जी सिर्फ ए कहंदे सी कदे किसी दा माड़ा ना सोचना। अगर किसी नू हेल्प नहीं कर सकदे ते फिर भी ओदा माड़ा ना सोचो, ओदा माड़ा ना करो। माड़ा इज मतलब उसको डोंट हार्म हिम, उसको उसका बुरा मत करो। इट इज वेरी सिंपल एंड हर पल मतलब जस्ट हैव अ प्योर माइंड। कभी गुरु जी ने, और गुरु जी का लंगर पूरे रूप से खाओ। कभी गुरु जी ने ये नहीं बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ही मेड लाइफ वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। अदरवाइज कितने ये पंडित पुरोहित सब कुछ क्या क्या करने को बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोला गुरु जी ने कभी भी।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਨਮੋਂ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੀ I was hardly 8 or 9 years of age when I first trekked up to Amarnath, and when that is where Lord Shiva's abode is, yani ki Guru ji da abode, Rab da abode. But yes, in person he called me to him. In I can't say I went to him kyunki Rab de kol Guru ji de naal te ek patta vi nahi phatakda ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ in 2006. It was March 4th or March 5th, I don't clearly remember, when he first called me to him. And मैं गई अपनी friend ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ Empire State. Empire State ਜਦ ਗਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ roses ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ I'm army officer's daughter, army officer's daughter-in-law and army officer's wife. So I thought pakka somebody has spread a lot of perfume here, roses ke aise, we do that when the VIPs are coming. So I went along and we went in, and Guruji alti palti baithe si ek sideboard de utte. He looked so dynamic, he looked so young, inne sone jaise sangmarmar de bane ho na. He was looking beautiful. And my friend, she pointed, she said, meet my Guruji. I looked at her. They, ਅਸੀਂ ਤੇ we are used to ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਜੀ white ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but Guruji was sitting wearing a very beautiful floral shirt, half sleeve shirt, and he was wearing Punjabi drain pipes. And I told her, I just looked at her, and I just thought that he's so young looking. And suddenly he looked up, and down below, sitting bent at his knees, one person whom I remember is Colonel Joshi. He was sitting down, and I didn't know Colonel Joshi either. But onanu mein जिस तरह time बीत्या, I got to know it's him, but I remember him so vividly. And उसी वेले ना गुरुजी ने अपने ऐसे सिर ऊपर किया ते ਮੇਰੀ friend ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰਜੀ meet my friend. And ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਵੇਖਿਆ, and I thought he's so young looking, and I was a little flummoxed. But when he looked at me, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मुझे लगा पता नहीं कैसे, मतलब जैसे तीरे अंदाज होती है, आर पार नजर, आर पार. I felt as if I've been through an MRI, I've been through an X-ray, like in every whatever way, I felt as if, everything is bare. And I was completely and totally, जैसे actually मेरे रोंगटे खड़े हो गए. He looked at me, and he just ऐसे हाथ करके ना इशारा किया मेरी सहेली नू कि अच्छा ठीक है इनू मेरी सहेली तेरा means I can go in, that it's open to me. He sent me in. मैं अंदर की तरफ गई. थोड़े जो लोग बैठे सी, बड़े लोग सी, I recognized a few faces. जाके उथे साइड ते बैठ गए. थोड़ी सी देर बाद ओम नमः शिवाय दा म्यूजिक शुरू होया, एंड नाले उथे ना छोटी छोटी ग्लासेस विच चाय आई. तो 8 को बज रही सी. I looked at my friend and I told her, I said, I don't want a cup of tea. She says, "Eh, cha nahi hai, prasad hai." I just thought, I said, मैं ले लेती. थल्ले फौजी स्टाइल में थोड़ा थल्ले प्रसाद छड़ देती तो कहती कि नहीं पूरा पी लो, प्रसाद है. मैं पी ली. इन्नी देर दोबारा आ गए, फिर प्रसाद लेके, चाय प्रसाद लेके. मैं मना कर देता, I didn't want to have it, but my friend had a second glass. So I looked at her, I thought it's okay. इन्नी देर उधरों गुरुजी आए. उन्होंने पूरे अपने, he was wearing grand clothes, flowing robes. इन्ने सोने सोने इस तरह कपड़े पाए सी ना. When I was a small child, about 5 or 6 years of age, तब मैं देखिया सी गोगिया पाशा नु, the world renowned magician who's in the Guinness Book of World Record.
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਗਿਆ ਪਾਸ਼ਾ ਹੈਗੇ, that he can twist the whole world। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। he is actually the world's biggest magician। and ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ that was the first day that I set eyes on him and in person। I won't say first day because मैं बचपन से शिव भक्ति and हमेशा शिव जी के मंदिर में जाना, व्रत रखना, सब it was, but वो ਜਿਹੜੀ मीटिंग सी मैं मतलब it was like divine। and they say कि गुरु जी कई दिन मतलब बहुत ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਮ ਨਮः शिवाय खत्म होया ਤੇ my friend Olga, she took me to Guruji and she said, Guruji, है मेरी friend है रितु। गुरुजी मेरी तरफ देखते ने ते कहंदे ने रितु कौन? He was looking so beautiful and इतनी खुशबू आई सी तो मैं फिर भी नहीं समझी। I didn't understand the impact, I didn't understand where, you know, in whose sharan I was। and he said ना की है। मैं क्या रितु कौन सी थी बोल? मैं क्या रितु सेठ, daughter of Colonel Oshral, wife of Colonel Ashok Seth। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕਰਨਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ। I just taken aback ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ हाँ जी। I didn't understand, मतलब मेरे एकदम सर के ऊपर से निकल गया, it was beyond me। फिर कहते बच्चे, मैं क्या एक बेटा है वो दुबई छेगा। he said ना की है। मैं क्या अखिल रात सेठ ते कहते इंज करके इशारा किया and he sent me to the side and उत्थे वो बैठे सी अपना वो फोटोग्राफर, he is also world renowned photographer, इन्ने वड्डे वड्डे रेड केप पाके, and he made me sit with him and we sat down for लंगर। कदे इस तरह दा लंगर नहीं खादा सी, थल्ले बैठ के ओदे च ही सारियां नु रोटी ते अंकल ही पुट रोटी, ओथे सारे अंकल आंटी कहंदे ने एक दूजे नु, ही पुट रोटी इन माय हैंड, मैं थल्ले बैठ के खा लिता, लड्डू प्रसाद मिलिया, सब खा के फिर I told my friend कि चलो, because before when we left home my husband had called from Srinagar and he said, where are you going? I said, I'm going with my friend to her guru। and he said, eh koi time hai guruan de jaan da? So my tension had already built up and I told her, I said, let's go। so she tells me, she says, when you go to the chief's house, don't you go to say thank you to him? I said, hello, एक और स्यापा। फिर बाहर कहती I said, let's go। she said, let's go wash our hands first। ते वो सामने we went, there was an empty plot there, उधर जाके ਅਸੀਂ हाथ धोते वापस आए। वापस आकर के लाइन विच खड़े हो गए, गुरुजी दा शुक्राना करन वास्ते, थैंक यू करके आज्ञा लेने वास्ते। जब खड़े हो, जब लाइन में जा रहे सी सारी सब लोग ऐसे दंड करके, they were, you know, माथा टेकोइंग him, and I looked at him and I was thinking, I said, he is so young, I'm not going to touch his feet। and मतलब look at how naive, मतलब मैंने आज बोल रहे जी, मैनू लगता है कि बट आई कहते ना गुरु जी ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਸੱਚ ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ I am not going to touch his feet, ਅਤੇ he is so young। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ शहनशाह de शहनशाह मैं की दसा। so his feet were out but he moved his feet in। I was very happy। I just bowed down like this and said thank you, joined my hands, said thank you and went away home। and when I was sitting over there in the darbar, my son had called me करीब 3-4 दिन पहले ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ when I was sitting over there, मतलब होता ना वो टेस्ट मी की अच्छा पता नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ
ख्याल आया कि अगर तुसी रब हो, अगर तुसी ईश्वर हो ते मेरे बेटा दा कम कर दियो. That was a Sunday night. संगत जी Sunday night दी गल सी. My friend, she dropped me home करीब पौने 11 के करीब और निकल गई. घर चली गई तो मेरा बेटा मैनू फोन करता है दुबई तो around 11:15 and he tells me, he said, Mom, I don't know, but the Sheikh has called me to Palm Strip Mall at 11:45 your time. मैं क्या है जी? कहना हाँ. तो मैं कहा ठीक है. कहना and I said ठीक है. तो I thought I still संगत जी मैनू उस वेले भी समझ नहीं आया. मैं 2 and 2 I could not put it together कि किस तरह ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ. ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ retrospection ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ I go backward, I think I realize, I said, oh my God, मतलब मैं किस मुंह तो मैं रेंग के थैंक यू करा, रेंग के सॉरी बोलू फिर भी कम है. एंड ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 12:01 ਵਿੱਚ. that means it was Monday morning, and he tells me, he said, मां मेरा काम हो गया. मैं कहा आज 15 मिनट ਵਿੱਚ किस तरह कम हो गया तेरा? तू तो इतने दिन तो तू कह रहा 2 महीने तो जा रहा है. ਉਹਦਾ कम हो गया. That night I was very happy. I still didn't realize that this was the reason. My Guruji was the reason. My Guruji Maharaj was the reason for it. That night he came in my dream and he asked me, he spoke to me, he said, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਿਲ ਰਾਜ ਸੇਠ ਹੈ. And he's talking to me, Sangat ji, in my dream. And I am saying, ji haan. So he gave me a very special blessing for my son that night. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ I have to go and thank him. That's how I realized the next morning that my Guruji made this happen. So my husband and I, we had then gone to Dubai. Life went on. We spent about good 2-3 months. And it was there at the back of my mind that I need to go and say thank you to my Guru. Then I rang up my friend after about some time and I told her, I said, I want to go and thank your Guru. This is how I said to her. I said, I want to go because from before Pakistan days, my parents, we all used to go to Baba Lal Dayal ji. And Guruji, and a lot of Sangat, I've heard Guruji Satsang from them. And, this Sabina Kochar, I've heard it from Varun Uncle, from all of them. They all used to go to Baba Lal Dayal ji as well. So I never ever realized that, okay, this was a journey because Guruji bhi aise घुमा के पूरा सफर करा करके फिर वो अपने पास ऐसे पकड़ के रखते हैं. After a few days, I told her, I said, I want to go to your Guruji and thank him. She said, I'm sorry, I've got some friends coming from Chennai. Tu aap pe chale ja. So I just picked up my Maruti and I drove down. Same process. I left the gaddi outside. Inni जोर दी गुलाब दी इन्नी strong खुशबू आ रही. फिर मैं वही सोचा, मैं क्या फिर I still didn't realize the impact कि इस तरह क्यों हो रहा है. And I went in and sat down. The same process went on. Langar kita and everybody was thanking. This time I thought, I said, I must also thank him, touch his feet and thank him. His feet were inside, under his robe. उन्होंने अपने पैर चरण बाहर कीते. इन्ने सुंदर संगमरमर जिस तरह होता है उस तरह दे उन्हां दी चरण. So मैनू लग्या कि that if I touch his feet, वो तो मतलब I felt that अच्छा मेरे इन्हां दे पैर गंदे ना कर दिया. So very delicately I touched his feet with the tip of all my 10 fingers and said thank you to him and came home. And when I came home, Sangaji, after brushing my teeth, etc. and all, I realized कि जो खुशबू वहां बाहर आ रही थी outside Empire Estate, वही खुशबू मेरे घर में जैसे ऐसे whiffs of it आ रही है. और मैं हाथों को सूंघूं, मैंने फौजी स्टाइल कैंटीन का साबुन होता है वो लिरिल यूज कर लिया मैंने.
अब लिरिल की खुशबू और गुरुजी की खुशबू तो जमीन आसमान का कोई मुकाबला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे हाथों से कैसी खुशबू आ रही है. आई हैड नॉट यूज्ड एनी परफ्यूम, नथिंग. आफ्टर अ व्हाइल अगेन आई वॉश्ड माय हैंड्स. दिस मतलब एंड नेक्स्ट डे माय मदर शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट मैं तेरे घर कॉफी पीने आ रही हूँ. मैंने कहा आ जाओ. फौजी स्टाइल कॉफी बीट करके उनको जब जैसी वो अंदर आई, कहती कि ये क्या तूने इतना परफ्यूम छिड़का हुआ है. मैंने कहा है जी मैं तो कोई परफ्यूम नहीं छिड़का. कहती अभी झूठ बोल रही है, इतना परफ्यूम छिड़का है. फिर आई डिडंट अंडरस्टैंड. गल खत्म हो गई, कॉफी पी के चले गए. अगले दो जो भी कर आए, बड़ा बड़ी गुलाब की खुशबू आ रही है. Then after about 4-5 days, I rang up my friend. I said, यार ये since the day I've gone and thanked your गुरुजी, तब से मेरे घर में इतनी खुशबू है कि कोई भी आ रहा है घर में तो मेरे को यही बोल रहा है कि तुमने क्या परफ्यूम छिड़का हुआ है यहाँ पे. And I didn't realize. Then she told me, she said, Ritu, that's my guru's way of blessing you. I realized I thought this had never ever happened to me in my whole life कि मेरे घर में ऐसी रब दी खुशबू रहे. कदे नहीं सोचा सी. It was simply amazing. I lost my husband in 2007, and after that I lost my father also in 2006, and my husband in 2007. And very big loss. जैसा and एक किला टाइप नहीं होता, वो एकदम टूट जाता है. To lose the most loved people, caring people so fast. So my son and I, we were quite lost, and we were not like, pretty, very, very unsettled. I won't say pretty unsettled, I'll say very unsettled. And how he took us, the journey, मतलब हर वेले एक एक पल मेरे गुरु ने साडा हाथ फड़िया है, सानू सेटल कीता है. He has shown us, taken us up, flying high, and it is only and only thank you to my Guruji. 2010, I lost my mother. Before I lost my mother, he came to me and he said, Ritu Aunty, I'm going to take I'll be coming on, he came to me in my dream and he told me I will come and take your mother on Monday evening or Monday or Tuesday morning. I rang up my sisters. I couldn't tell them this because everybody doesn't believe. So I just told them, I said, I think it's time that you all come and let's stay here together. That's what I told them. I said, because I think mommy is going to leave us. On Saturday, my mother, I had gone to Bada Mandir, and those days we used to, like itna rush nahi hota tha. So we used to carry ऐसे samosa prasad, laddu prasad, and we used to take over there, and near the coffee table we all used to have and बांटते थे और खाते थे, enjoy करते थे. So I brought some laddu prasad home also and came back and put it in my mother's mouth and gave her, वहाँ गुरुजी का थोड़ा जल. She was not feeling too well. That same evening, Saturday evening, she went into she lost consciousness, and I knew he had already warned me that he's going to take her. And he prepared me for this because he knew I had already had such heavy loss. So, and I'd also lost my father-in-law in 2006. So he knew that, okay, at some preparation, I think like he was taking me through the journey. And my sisters had come. So Saturday, Sunday, and Monday, then Tuesday early morning, he came, and at about 5:45, he came sitting. He was sitting on his throne in Bada Mandir on the beautiful chair in his Singhasan. And I remember when he came and he said, I'm going to take your mother, and he took her. So after that, मतलब मैं अपने जैसे जो मैं अपने सत्संग
बड़े मंदिर ने इन्होंने बोला है मेरे को अपने सत्संग शेयर करने को. आई होप थ्रू माय सत्संग, कहते हैं ना, सम मैसेजेस कम टू पीपल एंड एवरीबडी कैन रिलेट एंड वी फाइंड, at least I got so many messages through people, संगत people, और गुरु जी के कीर्तन जब बजते हैं उसमें, बिकॉज गुरु जी कोई प्रचार नहीं करते थे, कुछ नहीं. He never spoke, he never told you to, he only just said कदे किसी दा माड़ा ना करना and have purity of thought. बस और कोई, अपना मन साफ रखो. एंड कोई उन्होंने प्रचार नहीं किए, कभी कुछ नहीं. So I'm just sharing my personal journey in the hope that, okay, you can, people can also, because मतलब इनके साथ तो, एंड गुरुजी रब है, और रब की कुर्सी में तो कोई बैठ ही नहीं सकता ना, तभी तो गुरुजी के, नहीं तो ऐसे होता है ना कि अच्छा गुरु स्वयं ऐसे कम ना हो, बट रब की कुर्सी तो सिर्फ रब की ही होती है. और रब जब आते हैं, सपने में आते हैं, तो वो तो उनका साक्षात दर्शन है. एंड 2011, so I'll share some 2011, I'll share some of my personal experiences after I lost so many important people in my life. And 2010 में when my mother left, it was 19th of Jan, and my beta had been telling me that, वो भी ਹੁਣ वापस दुबई नहीं जा सके, because he knew that, okay, mummy will be alone. And ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ, then he said, ma, I want to do my own business. ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗਾ. ਫਿਰ I have no idea how. So he started reality work. He started working as a property agent. ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਡੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਬ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ I wouldn't have any prasad on Monday. जो भी मिलना तो I used to put it in my purse. One day Colonel Mathur tells me, he says, आंटी ये प्रसाद खा लो. मैं क्या, नहीं आज मंडे है, नहीं खाना. He said, नहीं खा लो, because गुरु जी ने तो कदे ही सिवाय करवा चौथ ਦੇ ਵਰਾਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਐ ਕਰੋ. ਤੇ he kept telling me ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਐਂਡ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਈਦਾ. ਇੱਧਰ ਖਾਈ ਤੇ ਦਵਾਈ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਿਠਾਈ. ਤੇ he told me many times, and ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਥॉट डाला होगा मेरे मन में, ਤੇ मैं ਉਹ समोसा प्रसाद खा लेता ते लड्डू प्रसाद खा लेता. मेरे को करीब 5 मिनट में, within 5 to 10 minutes, my son rings me up and he says, Ma, I've been trying to work on a deal for very long, last about 6-8 months, and he says everything is fructified. And that was the time when he made his very good money that time, and he was able to set up and start his own work shortly after that. In 2011, maybe because of the stress or whatever it was, I started feeling very uncomfortable. And हम लोग कहीं भी जाना था, I would tell my son to stop the vehicle. I had to use a restroom continuously, repeatedly. बहुत ज्यादा बारी. मैंने समझ नहीं आया कि है. I was very, very uncomfortable. So it was somewhere in November, I think 6th, 7th it was, or 8th. मैंने clearly date नहीं याद. जब मैं गुरु जी दे मंदिर जब गई, पहुंची ते सिजदा किता, ते मैं गुरु जी ने पूछा कि what's wrong with me. That night, गुरु जी gave me darshan, and जब भी गुरु जी दर्शन देते हैं, ते he will always, he wakes me up. And darshan de करके गुरु जी दर्शन देते हैं, ते he is at a very high level. Then there is one me that is sleeping, and he shows one me standing ਉੱਥੇ, ਤੇ one ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, I'm lying horizontal, and he shows inside my body, Sangat ji, there was so much of some kind of a infection or what it was, I really don't know, but there was a lot of, like a watery substance at various places inside my body. He showed me this, and I woke up, and ekdam mere na aisa, I was like shocked to see what he had showed me, and he's looking at me and he's smiling.
his smile was put my mind to rest that no, nothing is going to go amiss at all. And during that period, Sangaji, from November 7th, 8th till about, I think it was uh, around February, March 2012, that every single day I was called either to do, क्योंकि संगत जी, either to do satsang or I would be called for langar. Every single day it happened कि मैंने मतलब चाहे दोपहर वेले या शाम वेले एक बार ते दिन विच सत्संग ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ used to tell us ਤੇ सत्संग ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ सत्संग ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ सत्संग ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਜੋ सत्संग ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ during that 3 months हर रोज I was invited इधर नहीं तो फिर बड़ा मंदिर will call me but सत्संग दा मतलब उथे सेवा कुछ है but पक्का 100% कुछ ना कुछ होता सी by March I stopped feeling discomfort. I stopped having that excruciating pain in my legs. And I was able to, by April, I had gone back to my gym, regular routine, everything was absolutely regular. And I was because I've always been a sports person earlier and an athlete, so I was back to my old regimen of being able to do all my activities. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ किसी डॉक्टर को नहीं गई किधर भी नहीं गई गुरु जी दे लंगर विच तदे मैं कह रही सी मैं गुरु जी दे लंगर विच 11 जो मतलब हर गुरु जी दे लंगर विच इज अ कंप्लीट प्रसाद फॉर योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस मेरे कोलो ज्यादा ते है कोई बोल ही नहीं सकता बिकॉज व्हाट आई लॉस्ट व्हाट आई गेन्ड एट एवरी इंस्टेंट एट एवरी स्टेप he knows ਤਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ I want to share a small sangat even about how my son got married. Being from totally army background and everything, as soon as my husband left, mother went, father went. And when my mother, after my husband and my father, I realized, I thought when my mother was still alive, I thought, jaldi se main iski, let me get him married. So I started looking for all service personals, daughters, because being from a service background, that's when I was looking at, my husband's friends, kisi di ona di koi. So karke, there was a friend he had, and I thought, okay, let me, get my son married to his daughter. ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬੜੀ engagement ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੀਤੀ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ and I used to go to Guru ji every single day after I lost my husband and ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ I got a shock. I said, महाराज जी दा फोन ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ महाराज जी अखिल ਦੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣੀ and ਗੁਰੂ ਜੀ had sent that message through him direct. He said ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀ. I didn't understand this. I thought what he means is that I need to be consult a pandit properly and take the dates and etc. And this is what I thought. I said जी करके मैं फोन बंद कर देता. That whole thing fizzled out. I think whatever ceremony etc. done within about hardly within a month and a half, 2 months or so, everything just broke up and was set aside. I never understood how, what, and even इन्नी आराम नाल सब कुछ हो गया वो भी नहीं समझ आई कि क्यों होया. फिर मैनू there is a there is a then my son and I, once we were both coming back from this place, Jaipur Ajmer Sharif, I get a call early in the morning
at about 6:45, 6:30 or 6:45, we were driving back, and I get a call from Lena Aunty, and she tells me, she says, and before that, Lena Aunty had visited me, and Guruji had shown, like I told you, I said, Sangat ji jad Guruji dream ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ that flying carpet, Persian carpet ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ and he lands in my house and he says and he's telling Lena aunty ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ because I was praying very hard to him to sort out all these things and you know how to take life forward, what to do, etc. समझ नहीं आ रही थी that all the elders in my house had gone and she rings up. Now Guruji has already shown her to me in the dream and she rings me up. She says Jai Guruji. I said कौन बोल रहा है? She says मैं लीना आंटी बोल रही हूँ. ਤੇ मैंने कहा जय Guruji. She says I didn't know that the auntie that whom Guruji had shown is Lena aunty, the whom he had shown in my dream. Now then she tells me, when she puts 2 and 2 together and she tells me who she is and then she says ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ Guruji ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ संगत जी, look at how Guruji monitors. Just leave it to him. पूरा surrender करो, सोचो ही मत, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੋ। And ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ टीन, ऐसे टीन का एक बड़ा सा बक्सा है। Oh God, I understood what he means is trunk, because ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟਰੰਕ ਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਰੰਕ ਮੇਰੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੇਜ ਕਲਰ ਦਾ ਕਰਟਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਦੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੋਂਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਡਸ ਸ਼ੀ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਟਰੰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। Then I realized कि अच्छा, so Ambala, when my husband was commanding the regiment in Ambala, वो beige color दे पर्दे में उथे उस college Ambala cantage उथे Allen by Lines वो पर्दे मेरे उथे ओदे विच पाए ने। Then she said जिथे तुहाडा जूता दा एरिया है उथे बहुत गंद पे है। गुरुजी ने क्या है वो तुसी सारा गंद साफ करो। Then she tells me, she says Guruji कह रहे ने कि पहले ही बहुत लेट हो गया है, पहले ही बहुत लेट हो गया है, तुसी 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਸਕਿੰਗ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਦਿਏ। ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਂਗ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕਾਰਪੇਟ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਡਸ ਦੇਅਰ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਸਟ ਹਿਟਸ them and clears my ਬੇੜਾ ਤੇ all this is happening simultaneously। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ only knows ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ like my husband is gone, my father is gone, my mother is gone ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਖੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬੇਜ ਕਲਰ ਦੇ ਕਰਟਨਸ ਪਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10-15 ਲੋਕ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ,
ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ। then एंड गुरु जी हर रोज कभी भी मेरे सत्संग चलते जाए, जहां जाऊं किसी ना किसी सत्संग के लिए मुझे बुला दिया, बड़े बड़े मंदिर में डेली में गुरु जी बुला रहे हैं मुझे। दैट and for having been a teacher all my life, that afternoon short siesta is a must। तो मैं वापस आई। अच्छा, इधर मेरे बेटे दा रूट्स रियलिटी बिजनेस सेट कर दिता उन्होंने। एंड मैं वापस आई ऑफिस तो, and I just came and I took a short afternoon siesta. And Guruji shows a very beautiful dream. It's a lovely white cart and he is driving my cart and he is telling me, he says, Ritu aunty, why is your speed so slow? I am driving your cart. These are my Guruji's words. Agge Guruji बैठे ने, थोड़े का पीछे सीट ते मैंने बिठाया है। तो कह रहे, रितु आंटी, why is your speed so slow? I am driving your cart. And समझ नहीं आई कि दिखा की रहे हैं। फिर मैंने दिखांदे ने एक कुड़ी, and he's telling me, एक कुड़ी दिखांदे ने who's holding my son's hand, and he shows beautiful children. And he shows मैनू इंज ना, like he's dressed me up like a queen and he's telling me, he said, तुहानू ए खिताब किस तरह लग्या? And every day when I would like, mine is a very small family, so I used to every day pray to Guruji. I said, Guruji, please give me a girl who loves my son and me as well, so that the family stays together. So look at how Guruji hears. मतलब वो तो रब है ना, he's omnipotent, omnipresent, omniscient, everything rolled into one. And he is telling me in the dream, he says, she loves you a lot. He's telling me about my daughter-in-law, that she loves you a lot. And that time she was not a daughter-in-law to me. She was just a friend to my son. And like she was just someone, she was actually not even a friend. She was just a colleague whom he had met. And then he's showing me, and I'm just thinking, and she's totally from a different background. She's the daughter of an agriculturist. And then he's telling me, ladki Punjab ki hai. And he showed me a huge shivling, and he's saying, ladki Punjab ki hai. And I'm thinking, ye ladki to Karnal ki hai, that means there is something amiss somewhere. And Leena aunty ne kaha, 10-15 लोगों दे नाल जाके तुसी विआह कर लो। मैं क्या ऐ की हो रहा है? And then he's telling me ladki Punjabi. So next morning 9 she's still working in some company, and she rings me up and she says, hello auntie, how are you? I said, I'm fine. Then I said, why don't you have a cup of tea or coffee with me? तो कहती है कि मैं ते आज ऑफिस विच बिजी हां, blah blah, शामी मिलांगे। तो मैनू मिलदी है तो मैं ओनू मिली बाहर सिलेक्ट सिटी मॉल विच। ते मैं ओनू पूछया, मैं क्या, where are you from? She says, मैं ते करनाल दी हां। तो मैं क्या, ओहो गुरुजी, ऐ ते 10-15 लोकां दे नाल इधर ते जाना नहीं है, समझ नहीं आ रही तुसी की कह रहे हो। Then he tells me, एदे कोलों पुछ, एदा पुश्ताना किधर है, किधरों है? When I asked her, I said, where is your पुश्ताना from? कहंदी, a small place near Patiala. She says it's a small village near Patiala, कि संगरूर सरूर कुछ इस तरह दी नाम बोली। संगरूर पता नहीं, होने भी तक मैंने पता नहीं, not that it matters। कहती a small place near Patiala, संगरूर या कुछ है। कहती मैं दादाजी lives there and all my ताऊ and चाचा सब वही हैं। तो मैंने कहा आप फिर करनाल से कैसे हो? तो कहती है my दादाजी has land in Karnal, so my father, he has sent my father there, he had sent to take care of that land। देखो गुरुजी की कर देने। फिर मैनू समझ आया कि इधर जाना है 10-15 लोकां दे नाल। फिर जिवें असी टुरे 10-15 लोकां दे नाल उधर जा करके मेरे मुंडे दा गुरुजी ने विआह कराया। मतलब मैं की दस्सां तुहानू, मैं ते जिन्ना थैंक यू करनी आ उन्ना ही घट है। एंड कहंदे ना गुरुजी दे लंगर विच सारे रिलेशनशिप्स हैगे। I had lost so many people,
And there was the place where I live in Scenic Farms. There was with my my father had not clearly written the will, and my mother had written a second will. ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਪਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. Everything, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼. One day he tells me, and ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨਾ pressure ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ. So he came and this what I'm going to share with you is just before ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਿਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ time ਹੈ, when Guruji showed, my husband was posted in Leh Ladakh from about 94 95 95 96 96 95 96 he was commanding 666 Aeropeace Squadron, and we also were living there. And he had, Guruji had the mountains in Leh Ladakh. On the time things there have changed, but the mountains there were very bare. And Guruji showed a very beautiful dream. And in that dream, he showed in a vadda pahad. Matlab, the mountains were of Leh Ladakh, aur utte chehra banya si mere Guruji da. And hath jede de si Anant. Means the hands were, they were like this. His face was on top. The top of the mountain was my Guruji's face. And just jinno kehande hai na Anant power. Tade Guruji kehande na Guruji te hege Anant. And he showed that the body was Anant. It was matlab आसमान से लेकर कर धरती में समाया हुआ पूरा आकाश, dharti, patal, everything was Guruji. End karke, and he's showing me nestled, like this. He's nestled and resting on the mountain very comfortably, and he's talking to me. There is a conversation that is happening. He looks down at me and he says, Ritu Aunty, and mere samne dikhate hain ki there's something else on my, I am more audible, uncle. Is that yes? Yes, Aunty. Aapki voice clear hai, perfect hai. Thank you. So he showed, and in that Anant Roop, he's showing that he's nestled me here like this. He's looking down at me and he's telling me, Ritu Aunty, this is the water you have to cross. And I look up at him and I tell him, but Guruji, I'm so small, I'll drown. He looks down at me and he tells me, but I'm with you throughout your life. This for me, Sangatji, was a very big thing, because that in itself put my mind to rest. Ki chahe wo munde da vyah ho, chahe kuch ho, if he's giving me a message and he's showing me something, then it means that it is ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ. ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ if you think of him at every instance, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ or whether you are putting a nail on the wall, you think of him and everything he will ensure it just happens the way it is meant to happen. There will be nothing amiss. There will be no void. There will be nothing wrong at all. So Sangatji, what happened? This complete property was in a kind of a dispute. And my sisters had grown away from me because of whatever the reasons were. And things had not been clearly stated by my parents before they died. So, however, he showed, and then he showed, first he showed this, and then he told me, he said, Ritu Aunty, the soldiers in this house are very strong. Is ghar mein aapka koi kuch bigaad nahi sakta. He told me exactly in so many words, exactly like this. I understood. And then slowly, he put everything in the right perspective with my sisters, with everything, and things got sorted out. And today we live here so comfortably, so happily. He resides here with me. So because he has shown me in no unmistakable, with such clarity that I never feel alone in my life. I know he's there with me. I know he's taking care of my every need. He was my doctor
when I fell sick, and I was very badly sick that time. I couldn't even bend down to do sajda to him. It was so bad. And he's taken care of me, be it my health, be it my wealth, be it my relationships, be it my properties, in every whatever thing he has taken care of me. So once, I was the army. After they give you this in they allot you a place like they give you a place in like a flat to live in, or whatever, like we call it the AWHO. So after I lost my husband, I was told to apply for that. And he like I told you, I said, Sangaji, Guruji takes care of every whatever thing. And somebody told me कि इसके लिए आप apply कर देना. Supposed to be a big lottery, and you get it at a very, 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 very reasonable nominal rate. It just goes threefold. So in 2010, he told me to apply for this, and so I applied. And that night, he shows a dream, and he tells me, in the dream, he's telling me, I have just got a flat, and I had hardly paid. I think I just paid about, I think somewhere about 45 or some amount I had paid. And he told me in my dream, he says, मैं तो अभी एक 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीदा है. मुझे समझ ही नहीं आई कि how is he talking such a thing. And I mean, I was totally at a loss as to what he meant by that. And sure enough, as soon as I got possession of that place, and the property dealer started calling me to tell me that, in case I'm interested in selling. And I was taken aback as to, so it is only and only for me, Guruji is my, ऐसा बोलते ना, रब, मतलब खत्म तो वही है ना, हर चीज का वो देखभाल करते हैं. And मतलब it is a marvel as to how, even like this Diwali, in the last few days, वो Diwali छोड़ो, even the way during the time of the Corona, how he has taken care. In the मतलब आप दिन रात बस उन्हीं का ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सिर्फ यही किया. मतलब यही सिर्फ तो क्या, मतलब इनके ये रब साथ हैं तो सारा जहां साथ है ना, सारा सब कुछ साथ है. मतलब everything, because मतलब during this lockdown period, I never thought that we will be eating so much of घर की खेती. इतनी उन्होंने बिजी रखा घर की खेती करने में, ये करने में, वो करने में. He never ever made us. And हर पल he took care. And उनको it is not कि आपको इधर उधर, उनको प्यार से तो बैठोगे, प्यार से बुलाओगे तो आप उनके साथ बैठोगे. एंड वो कहते हैं ना, एक वो सिद्धार्थ मोहन इतना सुंदर गाते हैं, कौन कहता है गुरुजी खाते नहीं, गुरुजी सोते नहीं, गुरुजी कौन कहता है. बिकॉज उनको प्यार से बुलाओगे, प्यार से बिठाओगे तो ऐसे पास आकर के बैठते हैं, ऐसे साथ देते हैं कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं है उनको शुक्राना करने के लिए. आप and this was the Corona was a very big teacher to all of us. And he taught us, to be, वो कहते सी ना, कदे किसी दा बुरा ना करो, हर वक्त सिर्फ, and have purity of thought. And he has shown his presence at every single instance. So just like this happened with me, when लीना आंटी के साथ, जैसे जब उन्होंने कहा था कि 10-15 लोगों के साथ जा करके, and then he blessed me, with such a beautiful grandchild. The grandchild was not coming, and I had gone with I have a friend, Aruna aunty, Dr. Aruna Sharma. She owns this Select City, and her friendship with me also is completely and totally only my Guruji's grace. Shortly after Leena auntie's this happened, that phone call had come. Within about 20-25 days,
he tells me, he says, ring up Aruna and tell her not to go near water bodies. And I'm thinking, who's this Aruna? And so I was very disturbed and I was crying when I woke up. And my son is asking me, he says, what happened? Why are you so upset? I said, this is what he has said. He said, देखो आपको वो लीना आंटी ने भी तो फोन करा ना जिनको आप ना जानते थे और क्या क्या बोल गए और आपका सब कुछ सत्ता आप अपना फोन दो मुझे. And sure enough, there is an Aruna and we ring her up. And her husband, he picks up the phone. He's no more. Guruji has taken him in his sharan. Inder, he says, Inder Sharma. I said, I want to speak to you, Aruna. He says, yes, I'm her husband. How did you get my number? I said, I have a message for her specially from Guruji. He says, I have switched on my phone after 14 days. तो मैं क्या मैनू गुरुजी ने उन्हें वास्ते एक स्पेशल मैसेज दिता है. He said, actually we are in the we are near South America and we are going to see penguins today. That is why. And मेरे को गुरुजी ने ड्रीम में यही दिखाया था that penguins है, snow है, water boy. And I'm a geography teacher, so I understood it either South America or it is Alaska, that side somewhere. And he says, how did you get my number? How did you? I said, he has said not to go near. He said, Mataji, we are on a cruise. I mean, look at this. And in my dream, he shows this lady is getting down from this huge boat, a huge ship, and going into a smaller boat, and tado slip kar jandi. Oh, she goes into the water bodies, into the water. And he says, tell her, and he has told me, tell her not to go near water bodies. Can you imagine? Now, I had gone with Aruna auntie to Goa. And Goa mein Guruji comes in my dream and he tells me, he says, kar jaake na satsang karna hai. Because he had shown me in my dream my grandchildren also, but there was no grand. And I ring up my son and I told him, I said, Guruji, I said, satsang karna hai. This is in 2016, 15. And he says, घर जाके सत्संग करना है. So I tell my son, I said, I'm coming back on 8th, तो 12 को सत्संग कर ले. He said, खुद तो ऐश करके आ रहे हो, मेरे से काम कराओगे, ऐसे तो आप डेट दे दो ना. So he said 19th Jan. मैं चुप कर गई. 19th Jan was my mother's death anniversary. And 19th Jan we had Guruji Sangat. One auntie, she comes to my house for the first time. It was a Saturday. And she comes to my house for the first time. When I meet her, Monday, Swere, we used to do, we would go for Guruji's Shiv Murti Seva. And there when I go on Monday, she tells me, Ritu auntie, who was that lady in pink in your house? I said, kyun kya hua? Immediately man mein hota hai. She says, Guruji has come to me in my dream and said that she desperately wants to have a baby. I got a shock. Then she told me and she gave special instructions to me. And just like once Leena auntie had told me कि पीछे से वो पर्दे निकाल के किसी को दे दो. She tells me कि इन्होंने कहो कि इन्हां दे दुपट्टे दे साइड लटकन जड़ी लगी है वो कट के सुट दे. तो we take out that pink suit जड़ा पाया सी और वो लटकन कट के we threw it in the कचड़ा. Sangat ji, Guruji has made our life so simple, so simple. कोई उनके there is no मतलब कोई वो मुश्किल नहीं है. वो ये नहीं कहते कि तुम ये मत खाओ वो मत करो. नहीं. He's a Rasak Vairagi Guru. He just that it was such a simple thing for us to do. He did it. And then he gave me such a beautiful baby in the house. Such a blessed, beautiful baby in the house that one is amazed at it. मतलब गुरुजी और कोई गुरुजी कभी ये नहीं कहते. There is he's really made our life very, very simple. We just surrender to him, we listen to him, and we sit with him, talk to him, eat with him. Life is beautiful, Sangat ji. Jinna vi shukar karo, ona kaate. And Sangat ji, mein happy Diwali to everybody. Sabdi life which lights, his light should be absolutely burning bright in our hearts, in our life. Guruji's light is burning very bright, and that is what keeps us going absolutely nicely. And shukar. Thank you, Sangat ji. Thank you, Sangat ji. Thank you, Mandir. Thank you, Gaurav ji. Thank you so much. Thank you, Vikram ji. Thank you, Kunal ji. Thank you so much
for giving this opportunity to share my Guru's Mahima with you all. Thank you so much.